This is the mansion of Sean John Combs, also known as P. Diddy. He's a rapper, producer, having 3 Grammys and 14 nominations. My behavior on that video is inexcusable. Apart from this, he has power to make uncomfortable Mike Tyson. Oh yes, he's glittering. He's the reason why Justin Bieber is suffering. Most of the time, he throws parties जिसमें बड़े celebrities आते थे. Justin Bieber, Tom Cruise and Will Smith जैसे लोग. That don't know what happens to the white man when he comes to a P. Diddy party. This is what happens to the white man. Everything was completely fine. Parties हो रही हैं, musics and albums आ रहे हैं, and nomination हो रहा है. But in New York, he was out with his family and taking picture with fans. And one morning, वो अपने होटल की तरफ आ रहा था, but 2 persons were waiting for him. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution. This video has really dark content. I'm about to talk about sexual abuse and drugs all the time. This video is rated R. Viewer discretion is highly advised. 4 November 1969, Harlem, New York. Sean John Combs was born and raised in Mount Vernon. उनकी मदर जेंसी एक टीचर थी और उनके फादर मेलविन फॉर्मर मेंबर थे यूएस एयरफोर्स के. बाद में वो ड्रग ट्रैफिकर फ्रैंक लुकास से एसोसिएट हो गए थे. फ्रैंक लुकास एक ड्रग लॉर्ड था एंड उन्होंने अपना सक्सेसफुल हीरोइन एम्पायर बना लिया था एंड उनकी वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर में थी इन 1960s and 70s. But in 1972, Melvin was fatally shot in his car during a drug transaction. He was solely raised by his mother. My father, he was killed when I was 3 years old. I don't have like a lot of memories of my father. He was a flashy kid. रैप, म्यूजिक, फुटबॉल खेलना उसे बहुत पसंद था. इन द अर्ली 90s वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया था. एट यूनिवर्सिटी उसने रेपुटेशन गेन कर ली थी क्योंकि वो लेविश पार्टीज़ देता था एंड कुछ पार्टीज़ में 1000 से भी ज़्यादा गेस्ट आते थे. इसी की वजह से वो आंद्रे हेरेल के अटेंशन में आ गया था जो कि अपटाउन रिकॉर्ड्स के फाउंडर थे. बाद में उन्होंने डीडी को इंटर्नशिप दे दी थी. एट द सेम टाइम्स वो ड्रग्स भी बेचता था. I sold drugs for like a day and I got chased by helicopters, doors got kicked down. It probably like the unluckiest day for a drug dealer. I was willing to do anything to get to it. But उसे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि उसे फुल टाइम काम करना था. वहाँ पे वो नए आर्टिस्ट को करियर गाइड देता था. इसके बाद डीडी ने एक बास्केटबॉल गेम एंड कॉन्सर्ट रखा था एट सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क एंड वहाँ पे 5000 लोग आ गए थे एंड जबकि वहाँ पे 2030 लोगों की ही लिमिट थी. इसी की वजह से 9 people died and 29 people were injured. City College was a deep experience for me. I was there, I was on the floor, I watched people take their last breath, regurgitate and die. A few times I thought I was going to pass out because it was hot on that staircase. You know what I'm saying? And when they closed the doors, I knew something was going down. Okay, you said a female? Yes, a female. Of asthma? Yes, she had an asthma attack. She passed out unconscious. They can't revive her. Talking about like almost, I would say like it was like 10,000 people outside. They were just crushing people down at the bottom of the stairs. They're saying you see people just laid out. Like I'm talking about kids completely limp, laid out. इस ट्रेजेडी में किसी पे भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगे थे. डीडी ने $75,000 दिए थे पर डेथ. बट डू यू रियली वांट टू नो कि डीडी ने ये सब हो जाने के बाद क्या बोला? I'm gonna show you. That's really how I started to become famous. Was through a tragedy. I remember one time somebody said like you're a tragic hero, and I said what does that mean? And they were like, in Shakespeare, he always has a tragic hero. 1990 डीडी ने बिगी स्मॉल को साइन कर लिया था and they started working on his debut album. I didn't know this monster has launched as Biggie Small. But आंद्रे हेरेल के उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे. फिर डीडी को उन्होंने फायर कर दिया था. This is the time where all the shit started. P. Diddy launched his own label, Bad Boy Records. उसके बाद उसने अपना फर्स्ट एल्बम ड्रॉप करा
Ready to Die with Biggie Small, and was hailed as an all-time rap classic and selling millions of copies and generating multi-platinum singles Juicy and Big Papa. इसके बाद उसने अपना जल्दी से लेबल और एक्सपेंड कर लिया था by releasing hit albums and जिसमें Faith Evans, Maze, 102 and Total भी थे. Just for information, he's also into the boys as well. I don't know much about the women's, but वो अपने बॉयफ्रेंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था and this is an example. I look at him like I say Jesus. And next question is, He loves kissing man all the time. मार्च 1997 बिगी स्मॉल को शूट कर दिया गया था उसी की कार में. उसके सिक्योरिटी गार्ड ने बोला था कि ये सब डिडी ने करवाया था. Why the hell would you rent studio time in LA for him to finish your album when in fact you got your own studio daddy's house? Let's keep it a buck. Let's stop this bullshit, man. Puff ain't want none of that beef. So what I'm gonna do is, y'all want the sheep? I'm gonna put him out the pasture. ये कभी भी सॉल्व नहीं हुआ कि उसे किसने मारा है, बट इसे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की राइवलरी वजह बताया गया था. Near fatal shooting, but he couldn't survive a second. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25. Here's NBC's Stan Bernard. There are multiple sources जिसमें बताया गया कि टूपाक शकूर की डेथ के पीछे पी डीडी था. I know that Biggie and Puffy are here tonight. Did you see them? Do you have anything to say to them at all? Nah, but even if we saw them, we are businessmen. We are not animals. It's not like we're gonna see them and rush them. So if they want to come and use this business opportunity to get on some gangster, you know, we do that better than anybody. 27 साल के बाद जब किसी को अरेस्ट करा गया था तो उसने बोला कि मेरे को डीडी ने $1 मिलियन दिए थे. इसके बाद उसने एक अपना सिंगल निकाला I'll Be Missing You, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग था 1997 का, एंड 2 एल्बम और निकाले थे द पुलिस, एवरी ब्रेथ यू टेक एंड नो वे आउट, जिनसे 7 मिलियन कॉपीज बिकी थी वर्ल्ड वाइड में. फास्ट फॉरवर्ड 2000. बाय दिस स्टेज Bad Boy had become one of the most important label in the rap. Artists like Marish Carey and Jennifer Lopez भी बोल रहे थे कि हमारे गाने को रिमिक्स करो. बीच बीच में PDD को अरेस्ट भी करा गया था फॉर पोजेशन ऑफ इलीगल वेपन्स, एंड इसमें जेनिफर लोपेज भी इन्वॉल्व थी. कंपनी के एक्स प्रेसिडेंट ने बोला कि मुझे डीडी ने थ्रेटन करा है बेसबॉल बैट से, एंड मुझे फोर्स करा गया है साइन करने के लिए ताकि मेरे शेयर्स उसके नाम पे चले जाएं. लेटर ऑन he buys a mansion in Hampton and जहाँ पे वो लेविश पार्टी थ्रो करता था, जहाँ पे सारे लोग वाइट ड्रेस पहन के आते थे एंड ये लोग उसे वाइट पार्टी भी बोलते थे. यहाँ पे टन्स ऑफ स्लैब्स, मॉडल्स, म्यूजिशियन एंड बहुत सारे बड़े लोग आते थे. वो सिंपल पार्टी भी रखता था एंड फ्रीक्स ऑफ भी रखता था. बट व्हाट इज फ्रीक्स ऑफ, जिसमें यंग गर्ल्स आती थी एंड उन्हें ड्रग्स और अल्कोहल देते थे ये लोग. देन दे डू द सेक्स शिट एंड द रेप शिट एंड दैट सेट. ये पार्टीज बस मियामी में नहीं होती थी, ये अटलांटा, न्यूयॉर्क, लास वेगास एंड लॉस एंजलिस में भी होती थी. इफ वुमेन डजंट हैव व्हाट वी वांट, तो आप क्या करोगे? डोंट वरी, पीटी इज गोना गिव आंसर. If you don't have what they need, they're gonna leave. right, Gotta right, keep them there. right. You need locks on the doors. Hey, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but Yeah. लेट मी जस्ट गिव यू अ रियल क्लिप जिससे आपको पता लग जाएगा ये वाइट पार्टीज में होता क्या था. That don't know what happens to the white man when he comes to a P Diddy party. This is what happens to the white man. It's so unfortunate. You gotta pull back though, so they can see. That's crazy. Come on, Matt, move out the way. You're still alive. ये फ्रीक्स ऑफ होने से पहले पीडीडी को सारी चीज अरेंज चाहिए होती थी. I don't know if this is just made up myth or if this is true, but I'm told that when you go to a hotel, anytime you go to a hotel, you don't just check in the way everybody else does. You send someone ahead to prepare the hotel room for you. it's called preparing the sexy. What's preparing the sexy? I mean, when I walk in, I definitely take pride in being the originator of the preparation of the sex. You might be thinking कि ये पूरा सच नहीं है, and you are correct. इससे ज़्यादा वर्स चीज़ें होती थी, बट
इसको एक्सप्लेन करने के लिए his girlfriend and Justin Bieber is enough to tell like what kind of disturbance thing he does. Before we start, I just wanna say कि this video is gonna go fucking really dark. Some words gonna hit your guts. Wanna see example? He didn't even leave his mother. Time. He ain't sitting in the house playing. He outside moving and shaking, baby. She come with me to strip club. I don't care. Real. In 2005, at one night, 20-year-old singer Cassandra Elizabeth Ventura, aka Cassie, scored a minor club hit in Germany with her debut singer Me and You. वहाँ पे PDD भी था. ये सुनने के बाद उसने कैसी को कन्विंस कर लिया था कि तुम बैड बॉय रिकॉर्ड ज्वाइन कर लो with 10 albums deal. Started hearing this record that was haunting me in the clubs, and it was, Cassie's record. 10 albums deal. This is not just a number. Taylor Swift ने 10 albums drop करे हैं, and you can see on the screen how much time it took to drop 10 albums. After that, they came into the relationship. धीरे धीरे ये फ्रीक्स ऑफ फ्रीक्वेंट होने लगी. फर्स्ट पार्ट या वो कैसी से भी बोलता था कि तुम इन पार्टी में पार्टिसिपेट करो. वो उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करता था. एट वन डे ही सॉ हर टॉकिंग टू एन अनदर मैन. उसने उसे फ्राइंग पैन से उसके सर पे मारा था. ऐसी एक बार कैसी कि डॉरी से फ्लर्ट कर रही थी एक इवेंट में. देन व्हाट ही डिड, यू कैन सी इट. Mr. Combs told Miss Ventura that he was going to blow up Kid Cudi's car and that he wanted to ensure that Kid Cudi was home with his friends when it happened. I heard about that. I definitely heard about that. And I found it quite funny that the car actually did get blow up. So I would say that was accurate. जब फ्रीक्स ऑफ होती थी तो वो कैसे से बोलता था कि तुम वेबसाइट का यूज़ करो एंड उस पर मेल सेक्स वर्कर को फाइंड करो ताकि तुम पार्टिसिपेट कर सको. एंड उस वेबसाइट पे लार्ज ब्लैक पीनसेस सर्च करो. मिस्टर कॉम्स के असिस्टेंट सारी चीज़ें सेटअप करते थे इंक्लूडिंग बेबी ऑयल एंड एस्ट्रोलॉइड एंड ऑल दैट शिट जो कि होटल सूट में रिक्वायर्ड होती हैं. ये लोग कैसी को कोपियस अमाउंट ऑफ ड्रग देते थे. मिस्टर वेंचुरा वॉज गिवन ecstasy, cocaine, GHB, ketamine, marijuana and alcohol in excessive amount during FOs, which allow her to disassociate during the horrific encounters. And 4 बार फ्लूइड्स लेना बहुत कॉमन हो गया था ताकि वो एक्सेसिव सब्सटेंस से रिकवर हो सके. मिस्टर वेंचुरा वॉज रिक्वायर्ड टू ड्रेस अप इन अ lingerie for FOs, and Mr. Com insisted she wear a white nail polish to contrast her nails with the skin of black man he hired to have a sex with her. वो FOs के पहले ही उसे इंस्ट्रक्ट कर देता था कि तुम्हें तुम्हारी बॉडी पे एक्सेसिव ऑयल लगाना है. एंड वो वेंचुरा से बोल देता था कि तुम्हें उन लोगों से बात करनी है and you also have to touch their body. Mr. Combs would say things like, grab that black dick and ask her how does it feel, as he directed her to perform for him. During FOs, वो वेंचुरा से बोलता था कि तुम मास्टरबेट करो एंड उनके साथ सेक्स करो एंड मैं ये सारी चीज़ फिल्म करूँगा. PDD इधर पे कैंडल्स का भी यूज़ करता था ताकि उसे परफेक्ट शॉट मिल जाए. जब भी वेंचुरा को उसका मोबाइल मिलता वो तुरंत ही फोटोज़ और वीडियोस डिलीट कर देती. PD उसे बार बार क्लियर कर देता था कि मैंने तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस एंड फोटोज़ ले रखी हैं FOs में. एक दिन FOs ख़त्म करने के बाद मिस्टर कॉम्स एंड वेंचुरा वेंट बैक टू द होटल रूम जहाँ पे मिस्टर वेंचुरा के दोस्त पहले से ही हैंग आउट कर रहे थे. बट दिस मॉन्स्टर वॉज सीवियरली इंटॉक्सिकेटेड. एट वन पॉइंट ड्यूरिंग द नाइट उसने उसके दोस्त को उठा लिया लाइक अ चाइल्ड एंड बालकनी से लटका दिया था. वही 7th फ्लोर होटल से. मिस्टर वेंचुरा एंड हर फ्रेंड वर स्कैर्ड बाय मिस्टर कॉम्स, बट वेंचुरा को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया गया था. Therefore, she was unable to respond Mr. Combs' terrifying behavior. She really wanted to get rid of this monster. What? What you gotta say now? What you gotta say now? You ain't got shit to say.
इन 2016 वो एक दिन लॉस एंजलिस के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में कुछ आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज कर रहे थे और थोड़ी बहुत फाइट भी हो रही थी। पी डीडी बहुत ज़्यादा ड्रंक था तो वो फाइट के दौरान ही पास्ड आउट हो गया था। नाउ कैज़ी ने अपना बैग उठाया एंड वो बाहर जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद ही डीडी उठ गया था। ही वॉज नेकेड, उसने टॉवल बांधा एंड भागता हुआ आया। कैज़ी वॉज वेटिंग फॉर द एलिवेटर, देन दिस मॉन्स्टर डिड दिस। Surveillance video exclusively obtained by CNN of music mogul Sean Diddy Combs amid several assault allegations. The video from March 2016 reportedly shows Combs attacking his then-girlfriend singer Cassie Ventura, throwing her to the ground near an elevator in a Los Angeles hotel, then seen kicking her twice and trying to drag her away. I don't know what kind of a monster he is, doing these kind of things with her own girlfriend. I don't know. Just like P. Diddy, he's also a monster. Usher described his early stages in music industries. At the stage of 15, he collaborated with P. Diddy, which was a big name at that time. In 1994, उसका self-titled album भी आ गया था. At that time, Diddy was 20-year-old. Just for your information, Usher के पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि वो कहाँ पे है. Later on, पी डीडी ने क्लेम भी करा है कि मैंने अशर की लीगल कस्टडी ले ली थी। एंड अशर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें देखी हैं। जहाँ गेट खोलो वहीं पे several people were doing that sack shit all the time. This is what he wants to say about these freaks off. Lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn some... Camp. Yeah, that's what it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going to... In the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was just filled with chicks and orgying nonstop, right? No, not really. I mean, but hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. जब अचर से पूछा गया कि now you are a dad, क्या तुम अपने बच्चे उन कैंप्स में भेजोगे? This is what he said. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. From his success since age of 14 till depression, the one person is behind it. That is P. Diddy. For sure you have heard the news. Justin बहुत violent हो गया है. Happy holidays, Justin. It's not gonna happen today. You know when? Is this funny to you guys? No, this is funny to you guys? Come on, get out of here. But आपको बाद में पता लगेगा कि why he did these kind of things. And one day, Justin met Usher and Justin उसे अपना mentor मानता था. And Usher is the person जिसने Justin को P. Diddy के पास भेजा था 48 hours के लिए. बाद में you'll gonna understand the meaning of 48 hours by the end of this video. उसने बोला कि जस्टिन को ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो कि 15-year-old kid ड्रीम करता है. You can find this video on Justin Bieber official YouTube channel. And ये वीडियो जस्टिन के ग्लोबल सेंसेशन बनने के पहले की वीडियो है. Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. At one interview, जब जस्टिन 48 hours का कॉन्टेक्स्ट दे रहा था तो डीडी ने उसे फोर्सफुली रोक दिया था. Got me a Lamborghini. Oh, well, that's nice. I haven't gotten it yet, though. Yeah, I know. When is that coming, that Lamborghini? We talked about this last He time. had the Lamborghini for a day or two, and he had access to the house, and he knows better than be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Cassie already revealed what's going on in Freaks Off and Puff Flavor parties. इसके बाद ये लोग पार्टीज भी साथ में करते थे. एंड इसी की वजह से उसे मल्टीपल टाइम हरास करा गया था टीवी पे
क्योंकि इन लोगों को फ्रीक्स ऑफ में उसे असॉल्ट करना एंड हरास करने की आदत थी। जब help it. He was just so delicious. So little. Just जस्टिन बीबर को ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी तो उसने पी डी डी से डिस्टेंस बना लिया था। बट कुछ टाइम के बाद पी डी डी के चैनल पे एक वीडियो अपलोड होती है। उससे पूछ रहा है कि वाई डोंट वी हैंग आउट लाइक वी यूज्ड टू बिफोर। Man, you good? I'm good. How are you? All right, young brother, everything's good? Selling out arenas and everything? Starting to act different, huh? इस वीडियो में जस्टिन उसे सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। यू कैन सी लाइक द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस कि वो कितना डरा हुआ है। डू यू नो व्हाट? ही ट्रीटेड जस्टिन जस्ट लाइक अशर। ऑल्दो अशर के हमारे पास ज़्यादा एविडेंस नहीं है। That's my brother right here from day one. We used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, just I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world. If you don't understand the meaning of Frosted Flakes, इधर पे जो पीडीडी के गार्ड थे वो हमें बताएंगे कि फ्रॉस्टेड फ्लेक्स होता क्या है। Yeah, I bet they did. Somebody frosted somebody flakes without the milk. These kind of disturbing thing he has experienced in his life. That's why वो इतना डिस्टर्ब रहता है। Take for granted encounters and And you can see on his YouTube channel उसने रिसेंट टाइम में कुछ अपलोड भी नहीं करा। इट्स बीन अ 2 fucking year. I don't have to tell you what is Justin fucking Bieber. If you are thinking कि इसे जेल होगी एंड बहुत गंदी पनिशमेंट मिलेगी, you are wrong. Man, these 2 videos are the perfect example of it. PDD लोगों को फ्रीक्स ऑफ में ही बस अनकंफर्टेबल नहीं करता, वो ऑनलाइन भी कर सकता है। Hennessy, come out and play. Sometimes he also rejected by kissing man, जो कि उसे बहुत पसंद था। He even make Mike Tyson uncomfortable. Do you understand the meaning of Mike Tyson? ये डेट पे भी जाता था मेंस के साथ, वो भी 48 आवर्स के लिए। एंड 48 आवर्स में वही करेगा जो कि उसने जस्टिन और अशर के साथ करा है। But you know what it is? We're going out on like a date. A straight guy date. Like straight guy date. To a guy's night, 48 hours in Vegas. You're seeing us at the beginning of the 48 hours. In 2022, New York passed legislation called Adult Survivors Act. This act allows victims of sexual assault a 1-year window to sue even if the statute of limitation run out. And फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कब हुआ है, आप इसे 1 year window में कभी भी डाल सकते हो। It is a victory for justice, and it is long overdue. Governor Kathy Hochul signed a new bill that allows victims of sex abuse to sue regardless of how long ago the alleged crime happened. Today is a big win. And this is the act that changed everything. कैजी ने केस फाइल करा एंड डीडी ने उसे इमीडिएटली सेटल कर दिया था विद इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। उसने कैजी को तो रोक लिया था बट और लोगों को वो नहीं रोक पाया। आफ्टर दैट लॉसूट्स कीप ऑन कमिंग ऑन हिम। I just want to say कि I have an official complaint of all victims. If you want me to create content on that, मैं बना सकता हूँ। After the lawsuits, they banged on him. They found thousands bottles of baby oil and hard drive. Apart from all the shit, वो satanic rituals भी perform करता था इन एफोर्ट्स में and हमेशा वो लोगों को invite करते ही रहता था। फर्क नहीं पड़ता वो नेशनल टेलीविजन पे है कि कहाँ पे है। Invite from you once. This is true. You used to have these crazy parties, and one invite was it self-destructed. After it was you talking, and so you gave. अरेस्ट होने के पहले he did one interview ताकि वो अपनी इमेज को वाइट वॉश कर सके। Y'all call me Diddy. Call me Diddy. Okay. But when I'm being love and I'm in that mood, because I have to always remind myself, we live in a toxic world.
And it's love versus hate. That's what's going on right now. Yeah. And I In the choose last, love. That's my he said name, this. And love wins. Love wins. Let's go, y'all. This video is not end. Do you really want to know what he's doing in the jail? Don't worry, this is not a real video. But why I'm saying कि वो बाहर आ जाएगा आसानी से. These my two videos are example of it. Hennessy.